I'll do it in a nice way. I'm not saying the blue corner and coming on. So I do the opening as a guy. So Paul Ajit on stage, he speaks for a couple of minutes, and then he said, I'll show you the trailer. He gets off stage, we throw that down, play twice. I do the grand entry for her. She comes on stage, does a photo op. You want to do a solo photo op? Yeah. We will do like this. ठीक है, so whatever. No, at that point, so I'll call and then I'll call Ajit, and then I want to and then we chat. Okay, bye. So now I'll make the announcement like a box. Okay, fine. Change it and everybody is aligned, let them do it. No, you please don't put the doubts. The same thing. Yeah. No need for the robe now. Yeah. No sweat. No sweat. No, see, there's going to be nobody. You want to come? Good afternoon, ladies and gentlemen. Nice to see a nice packed house here. You know, every time I come on stage here to introduce a film, I've sometimes seen the trailer, sometimes not. I sometimes have an idea of how the film is. But whenever it's a sports film or a sport-related film, at heart I'm a sportsman. And I just feel so happy when you celebrate, people like the lady in question today. So I remember in 2012, I was doing radio and I was following it on Twitter and social media, this lady's journey. We'd all heard the backstory. We knew what a tough life she'd had. And A, for a lady to be a boxer, B, to come from Manipur, from a small town, and try and make it at a big stage. Everyone was supremely excited that she had reached the big stage. And then there was that fantastic news flash that said bronze medal. And suddenly, everyone went crazy with the news and they loved every bit of it. And then, of course, the accolades kept pouring in because 5-time world champion, you had an Asian Games bronze medalist, the Olympic bronze medalist. I know maybe 50 people on Wikipedia or Google that, have actually won a medal. So I think this is something that is fantastic to actually celebrate the life of a lady like this. So ladies and gentlemen, I'm extremely proud to be part of this event where we're celebrating the life of the lady in question, Mary Kom. So I think a round of applause for the lady herself. And not to mention the center shot of Priyanka Chopra with the 2 children. She brought up 2 kids as well. So that's the movie today. And I'm very excited to see the trailer, but I'm going to call on stage a gentleman that will do the honors for you.
He's the COO Viacom 18 Motion Pictures, Mr. Ajit Andhare. Big round of applause, please. Has it started already? Yeah, so this is the tough job I have, which is to come between media and the trailer and say a few hopefully entertaining or important things. As a studio, it's a privilege to be presenting this film. My mind goes back to our last three, Bhag Milkha Queen, and last two, and then the third one being this. So as a studio brand, I think if our job is to make choices, these are the choices we are making. We're very proud and privileged to make these choices. I'm sure this film is going to create a different kind of a history that has not been seen before. It has already got a lot of interesting things about it. I don't know whether ever in history a world champion has played another world champion. I'll elaborate what I mean. If you've all sort of forgotten, Priyanka is herself a world champion. She won the beauty pageant in 2000. So I can't recollect any other instance where one world champion is actually, played a 5-time world champion. So I find this very interesting. So having got these claps, I won't want to sort of drag this further. I would want to certainly invite the gentleman who's making his debut with this film, Umang Kumar. And I think it is should be Umang's honor to present the trailer to all of you. Umang, over to you. Well, welcome everyone. My debut film. Thank you, Sanjay. Without you, it's not possible. Without taking much of your time, I just want to say that this is our work. We're very proud of it. Please watch it and hopefully you'll enjoy it. Ladies and gentlemen, presenting to you the trailer of Mary Kom. And now, ladies and gentlemen, introducing, in the red corner, the lady with all the muscle, the lady with all the talent. क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो, बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली। चल। तू पागल हो गया बिल्कुल। पर मैं बहुत अच्छा बॉक्सर हूँ। कुछ से बोलता मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर हूँ, पर मैं जीत भी रहा हूँ। क्या है बॉक्सिंग? बॉक्सिंग। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। हमेशा फुल फोकस। ध्यान गया तो ना गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। कोई लड़कियों से है नहीं लगता। क्यों करता है क्या? मेरा हाथ तक खाके तो देखो। जानबूझ के नहीं किया। डोंट वरी, तुम मेरे साथ सेफ। हमसे खेलो चुगली जान, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। इन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। बस किधर तेरा? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कॉम को भूल गया है। क्या मेरी कॉम बॉक्सिंग भूल गया है? तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। एक औरत मां बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया। एक चावल उगाने वाला किसान का बेटी मणिपुर का छोटा सा गांव से निकलकर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है। Magnificent Mary. तुम्हारे
तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल कर छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो, बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली। चल, तू पागल हो गया बिल्कुल। पर मैं बहुत अच्छा बॉक्सर। कुछ से बोलता मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर है, पर मैं जीत भी रहा मेरे साथ। क्या ये बॉक्सिंग? तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। हमेशा फुल फोकस। बन गया तो ना गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। बस 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 बस। कोई लड़कों से नहीं लड़ता। क्यों डरता है क्या? मेरा हाथ पे खा के तो देखो। जानबूझ के नहीं किया। डोंट वरी, तुम मेरे साथ से। ढंग से खेलो चुगली जंग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। इन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर बस हो गया, बॉक्सिंग खत्म। बस किधर तेरा? और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। दुनिया बॉक्सर मेरी कौम को भूल गया है। क्या मेरी कौम बॉक्सिंग भूल गया है? तुम एक फाइटर है तो और फाइटर कभी हार नहीं मानता। औरत मां बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़ गया। एक चावल उगाने वाला किसान का बेटी मणिपुर का छोटा सा गांव से निकलकर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है। Ladies and gentlemen, India's MC Mary Kom. Magnificent Mary. तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल कर छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। Now that said, goosebumps down my spine. Ladies and gentlemen, we can have a big round of applause. That really looks fantastic. And now we are waiting for that moment. Ladies and gentlemen, the lady with the muscles, the lady with the punch, the lady with all the talent, introducing the one and the only, Priyanka Chopra. I'm a bit fearful looking at the punches that you did over there. How amazing was she in the promo with all that working out and the shape and the punches. Big round of applause for her. Thank you. So I'm going to ask you something. In the non-ring finger, I want to see how far or how strong your punch is. Can you actually punch that? My punch? Yeah, your punch. Let's actually see this. I don't want to hurt you. No, I know. That's why I'm just taking the hand. I'm going to stand far away, and I'm going to do it like this. That's pretty good, man. You want another one? That, ladies and gentlemen, is Priyanka Chopra. But it was a tough film. It looks very tough physically, emotionally. And I know you like picking up these kind of films. But this really looks like a winner already. Was it really one of those levels where, tough to reach? Well, I think, first of all, thank you very much for coming. This is definitely
I would say the hardest film of my career. But I think for me, my biggest inspiration was Mary herself and how hard the team worked on making this film happen. I think, you know, Umang and his vision and how far he wanted to take it, the writers on the film, our crew, which worked, you know, crazy hours of 18 hours in the rain, in the cold, in really tough conditions. Sanjay sir, who took out time from all his meetings and dealt with me coming and opening the door and saying, sir, I need your help. But just everyone on the team, really. It's been a very difficult film for everybody. But the inspiration was Mary herself. I mean, this is her story. And I was just very happy when, you know, she saw the film. She called me up. She said, you know, she cried in 2-3 places and she was really overwhelmed. So for me, that's a testament of the fact कि हमने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा. बहुत कुछ सही किया है. The buzz has been created from the very teaser day. आप sportsman खुद भी हैं ना? नहीं. तो मैं actor हूँ. but ये sportsman बनना पड़ा आपको. All the training looked very real. It looked really like how when we saw Farhan trying to get in shape and, you know, do all that, it looked very real. तो आप बन गए अब क्या बॉक्सर? आई थिंक आफ्टर द फिल्म इज ओवर. I mean, अब मुझे बॉक्सिंग के बारे में इतना तो पता है डेफिनेटली कि यू नो आई कैन गेट इनटू अ बाउट, बट आई वुडंट से मैं बॉक्सर बन गई हूँ. एक एक्टर का काम ही ये होता है कि टू मेक whatever I'm playing, especially a biopic on a living, breathing person who's almost my age. I think वो सबसे मुश्किल बात रही मेरे लिए because you know she's right there. But yeah, physically मुझे बॉक्सिंग सीखनी पड़ी 2 बार इनफैक्ट, क्योंकि हमने फिल्म को 2 बड़े शेड्यूल्स में किया था. ट्रेनिंग करनी पड़ी ऑफ कोर्स, बट all of it comes with the territory ना. अगर बायोपिक लिया है तो ठीक से तो करना पड़ेगा. I don't want to know who you were practicing with off camera, but just check करने के लिए, just to see if the punches are going right. But I think we're going to leave it open to the media in just a bit. But you've got somebody very important to call on stage. Yeah, well, I think this film would not have been made at all if it wasn't for the idea by the makers of the film, which would be Sanjay sir and Umang. So I'd like to call them on stage one at a time. A filmmaker who has always had the panache of making movies and telling stories in a way that, you know, only dreams are made up of. And this is a film which needed a filmmaker who has that kind of vision. Someone who can pick up on the idea of the fact that a small town girl with big dreams in her eyes can go and conquer the world. I'd like to call on stage the one and only Sanjay Leela Bhansali. I'd also like to take the opportunity to call on stage the man who's actually made this dream into a reality. Wait, let me also say something about this man who has made this dream into a reality. When Umang first came to me, I've known Umang for years now, okay? Because हमने इतने सारे stage shows किए हैं साथ में. And when he came to me with the idea of the film, of course, as a first-time director with, you know, he was a little unsure what I'll say, what I'll do. But when he started telling me the story and the idea of the story, his vision has been so concrete from the first time which was about 2.5 years ago, when we first spoke about the film, to right now. I remember Saivan Ram had come for the narration, who are the writers on the film, by the way. And we had... I just knew as soon as I heard the film that, you know, this was something I really wanted to be a part of. And over the time of shooting this film, the amount the kind of difficulties that I think this director had to go through in putting this film together, a big hats off to you, Umang. This one is your baby. Please welcome on stage the first-time director, a huge technician in the industry, well-respected, Mr. Umang Kumar. And a familiar face who was there 5 minutes ago, Mr. Ajit Andhari. Could you please come on stage, sir? Yay! Why don't we get that music when you walk on stage, Ajit? I'd like to see that. You got it? Right, so I think we're going to open it out. Okay, fine, we'll do photo.
Where are the stools? Let me just get them back up. Yeah. Just before I open the Q&A, just a lovely word said by Priyanka about you as well. I know this is a baby that we were all waiting for as well. So much you will have to say as well. Also, before we open up, what would you like to say? प्रियंका के बारे में बोलूंगा तो बहुत बहुत बोलूंगा मैं, तो वो रहने देता हूँ मैं. मुझे इतना कभी याद तो है- सुनने दो संजय सर. तरस गई हूँ मुझे सुनने मुझे उतना याद है कि 2 साल पहले उमंग मेरे ऑफिस में आया था कुछ यूं ही मिलने के लिए, और लिफ्ट में जा रहा था तो मैं उसको बाय बोलने के लिए गया लिफ्ट तक, और बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, एक मेरी कॉम के ऊपर फिल्म है. मैंने कहा डन. लिफ्ट के पास मैंने उसको बोला डन, आई एम प्रोड्यूसिंग इट, यू आर डायरेक्टिंग इट, नो डिस्कशन. मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी. So I think that's what that moment is. It's when a film has to happen, वो इतना सिंपली हो जाता है. बड़ी बड़ी मीटिंग्स, लंबे लंबे डिस्कशंस, और एक स्क्रिप्ट को डाइसेक्ट करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं. वो लिफ्ट के बाहर जो हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी that moment I think always cherish all my life, because these are the moments that make a film like this and something that we are so proud of. So that is about Umang. Coming to Ajit, when I see the boxing bout, I see myself and Ajit in it. You know, two producers would rarely get along well. So one is a red corner, one is a blue corner. But One second, let me just get this. नहीं, मेरी आवाज वैसे ही पहुंच रही है आपको माइक. Yes, it's a very special film because मेरे को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एवरी यूथ के लिए, यहाँ पे पूरा जनरेशन के लिए. विमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि खुद एक फाइटर है और सिखाती है हमको कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं आप. और ये रोल जो प्ले करने के लिए मेरी कॉम का, मुझे लगता है हमारा ये जो एटम बॉम्ब है, ये जो पीसी है, ये जो उससे बेटर नहीं हो सकता. अगर हॉलीवुड के पास हिलेरी स्वैंक है तो हमारे पास प्रियंका चोपड़ा है. ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ. Better. Here is an actor. Here is a अभी बहुत पोलाइटली मुझे बोल रही थी आप लोगों को कि वो मेरे घर में आके मुझे नॉक करके कहती थी कि कैन आई गेट अ फ्यू मिनट्स. नहीं, ऐसे झूठ. वो घुस जाती थी घर के अंदर, वो दरवाजा Besides being talented, it's your commitment, it's the fire, it's the electricity, she sparkles. I love this commitment to your work, to your art. To play Mary Kom, to give so many hours to training, biceps. वो आदमी जैसी हो गई थी बीच में. मैं उसको कहता था संजय सर मुझे बोलते हैं कि देखा उन्होंने एक दिन कि आई मीन बैक अप जैसे शूट करोगे ऐसे मत कैसे हम गाना शूट करते, इसलिए मुझे स्लीव्स दिए गए थे बाय कवर करने के लिए. truly what Great's all about. This is what Ji was all about, what Veda Ji is all about. And I think Priyanka is in that league. As an actor, as a person, she's fabulous, and God bless her, and I love you a lot, PC. One big hug. God bless. Oh, thank you, Sanjay sir. Before the quick Q&A starts, yes, I want to mention a few people over here who mean a lot to me. Umang is here, but Vanita, his wife, who is his inspiration and the backbone, and please stand up and take a bow. I think it's important for you to do that, Vanita. She's a production designer of the film. She's the art director of the film. I want Sandeep Singh, my co-producer, to stand up and take a bow. Without him, this would have not happened. Everyone was Sandeep. Simon, Karan, Ram, everybody. Woo! So a great, is Shobha and Chaitanya here? I don't know if they are there. Before I'm making those great designs, Jayesh for cutting a beautiful trailer, Shashi and the new music director, Shivam over there. Everybody. And Ajit, thank you very much for being such a great guy and such a wonderful co-producer and producer with me. So I've enjoyed every minute. Love you and God bless you. And now we do open to Q&A. Yeah, okay, one sec. The gentleman there. There's one there as well, so we'll come there after that, yeah? Yes, I do see you. Hi.
You know, a lot of this film, I mean, most of this film is picked up from real life instances of Mary. So for me, the most difficult thing was to bring about her personality and how she must have been in scenes like that. Some of the film, when you watch, some of it is documented footage also. I'm sure you guys will have of instances that have happened to her, which we've tried to recreate within the film. So for me, the hardest part in the movie was that, to bring about Mary's personality. But I think there's this scene of Mary as a mother and her conflict and everything that happens to her, which for me is something I've not experienced, of course, since I've not had children. So I didn't know that was a really hard moment for me, to be a fighter, a mother, a homemaker. And to be able to balance all of that, I think, is one of a woman's greatest, most difficult roles. So to be able to bring that to the fore, I think for us was a really big challenge, definitely. And when you met Mary, which was the aspect or, concept that was very moving for you, or, very touching? I think for me, the story of Mary Kom is एक छोटे शहर की लड़की, farmers की बेटी, who had, it was a difficult time for her. Sports is anyway hard, as everybody knows, in India. So who came up, climbing the rungs with her hard work. And for me, the thing that touched me most about her was how she's still such a real person, and she's a girl. Okay, when you think about a boxer, सोचते हो कि boxing ring में इतनी tough होगी. जब मैं भी पहली बार मिली उससे, chiffon पहन के आई थी, nail polish लगा के आई थी, eye shadow, with the hair done. उसके gloves के अंदर हमेशा आप देखोगे कि वो nail paint पहनती है, उसका lucky charm है. तो she's a girly girl, which I really liked about her. तो मैंने उसकी, I tried not to make this Rocky Balboa and to give Mary's personality. वो मुझे बात बहुत छुई उसके बारे में. Did you have to go through a lot of physical training to be more stronger, both emotionally and physically? Not at all. हमने क्या किया उमा? हम तो ऐसे biceps तो ऐसे ही आ जाते हैं. बचपन से अभी तक कभी जिम गई नहीं है. जी जी. So that was the hardest part, to push her into the gym. Now go ahead. Did you do anything? No, I think I didn't realize how much it would be difficult for my body. As a woman, it's anyway hard to be able to get muscles, the way boys do. You have to have years of training for that. And we had to do it twice over within a span of 2 years. So yeah, going to the gym every day after shooting. We used to shoot 15 hours almost every day. And then uske baad, after having a long day, then to go and train for 3 hours was... मेरे बेचारे ट्रेनर धन्य है. प्रशांत, big shout out. Mr. Ajit, yeah. Earlier the film was supposed to release in October. Why did you prepone the date? And tell us something about the Manipuri actors that you've used in the film. See, you're always, as a maker, as a studio, looking to give the best release to the film. It's obvious that there are other number of films which are scheduled on the date that you referred to. So we wanted that this is a baby that we've grown with a lot of love and affection. So we want all the attention to get to the baby when it comes out to the world, and we thought that 5th is a great day. And the other good thing is that, which is something we found very helpful working with Sanjay and his team, that the film has been ready. So we've not had any delays, and also, we had a clear runway. So if there are other aircrafts, you can't take off, right? I mean, if the film is not ready and posters happening and all of that. In this case, the product is ready. We can choose a date, and I think we've chosen the best date for the release. Hello, Priyanka. Could you tell us about the Manipuri actors that have been used? Umang should perhaps. Yeah, we've taken a lot of Manipuri actors, I mean, Northeastern actors per se, and to make it more authentic, जो crucial parts जो play करे हैं, other than Priyanka, are basically Northeastern, Manipuri people, good actors that you'll And also see I think Umang had an idea that he wanted to push talent from the Northeast as much as he could. When Sanjay sir and Umang used to have these conversations in office, I remember that, we talked about the fact that we don't have Northeastern talent as much in the Indian film industry, and there is so much of it. So they were very sure that they wanted to push that, so that these so actors from the Northeast and talent from the Northeast at least gets a platform on a film which is about
the Northeast. And one more person I'd like to mention, which I think we've all overlooked, is that the main lead opposite Priyanka is this wonderful, wonderful actor called Darshan. So please take a big hand for Darshan. Absolutely. Darshan plays Onla. And my dear Rohini, I've forgotten to take your name also. You're the backbone of Bansari Productions, so love you. प्रियंका आप फैशन आइकॉन मानी जाती हैं। आप कहाँ हैं? मैं टुवर्ड्स योर लेफ्ट। Okay, got it. आपको फैशन आइकॉन माना जाता है और फैशन में बाल काफ़ी मायने रखते हैं। एक सीन है जहाँ पे आप पूरी कम्प्लीटली बाल दिखाई गई हैं, तो कितनी झिझक थी वो सीन करने, बिकॉज यू आर गोइंग बाल होता है। पहली बात ये मेरी ने किया है अपनी ज़िंदगी में, तो दिस इज़ एन ऑथेंटिक सीन इन द फिल्म। जिस बात को मुझे जिससे मैं बहुत एक्साइट हुई थी। एंड दूसरी बात, हर चीज़ से पहले मैं एक एक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी किरदार मैं प्ले कर रही हूँ उसको जितनी ऑनेस्टी से प्ले करूँ। वो मेरा चैलेंज हमेशा रहता है पर्सनल, कि मैं अपनी हर फिल्म में कितनी अलग अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ एंड कितनी रियल अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो झिझक मुझे बिल्कुल नहीं थी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मैंने तो 3 बार भी किया है। वो पहन के घूम रही थी, यो 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 बॉल कर मैं पहन के घूम रही थी। आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं अपने बाल नेवर से नेवर मैन, मेरे साथ तो मैं अपने आप को भी सरप्राइज कर देती हूँ। तो आप क्या हैं? यू नेवर नो। प्रियंका आपके राइट में आलोक हियर फ्रॉम OFM। यस, हाय। आपकी आवाज़ से पहचान लूंगी मैं आपको तो। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि मेरी ने तो उनको मना किया गया, जैसा ट्रेलर में दिखाया जाता है कि तुम बॉक्सिंग मत करो, घर के काम करो वगैरह व्हाटएवर। रियल लाइफ में, असल जिंदगी में कभी आपको किसी काम के लिए मना किया गया था जो आपने किया एज अ प्रियंका? ऐसे सवाल मेरी मॉम के सामने पूछ रहे हो आप, मतलब आई गेट इन ट्रबल व्हेन आई गो होम। हाँ, आई एम अ रिबेल विदाउट अ कॉज। आई लाइक टू रिबेल फॉर एवरीथिंग। काफ़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर दोज जो कहते हैं अगर उनको बोला जाए कि आप सिर्फ अपने आप सिर्फ इतना कर सकते हो और वो उसको तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ, किसी ने नहीं सोचा था मैं इस मुकाम पर होंगी, तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस स्टोरी से। एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट वुमेन बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर टोल्ड कि अच्छा अभी आप तो यहाँ पे ही हो, इधर के हो, आप इतना ही कर सकते हो। सीमाओं में रहने की बात नहीं है ये इस फिल्म में, ये सीमाएं तोड़ने की बात है इस फिल्म की। एंड आई थिंक एवरी सक्सेसफुल पर्सन शुड फील दैट, व्हिच डजंट मीन बिहेव बैडली बट व्हेन इट कम्स टू अचीवमेंट्स एट लीस्ट। 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। फिल्म क्या शिक्षा देती है, अगर आप बताना चाहें जो भी देख रहे हैं? आई थिंक हम अपनी तरफ से तो ये नहीं कहेंगे कि हम कोई लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह। मैंने पर्सनली काफ़ी कुछ सीखा है इस फिल्म से, अबाउट द स्ट्रेंथ, अबाउट रेजिलियंस, अबाउट बैलेंस, अबाउट फैमिली, अबाउट डेडिकेशन। आई होप कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मेरी से, उसकी ज़िंदगी को देखकर ऑडियंस भी सीखे या लोग भी सीखे, स्पेशली युवाओं के लिए ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आई थिंक फाइटिंग लाइक अ गर्ल विल बिकम कूल। प्रियंका, हाय, विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन आपके सामने। हाय विकास। प्रियंका, जिस तरीके से हमने देखा अभी मैरी कॉम जो है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में और संघर्ष करके वो ऊपर आई। अगर प्रियंका की बात करें तो उससे कैसे रिलेट करेंगी वो? प्रियंका ने भी काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में, क्योंकि आप भी बरेली से आई। मैंने उसी का जवाब अभी दिया था कि वो एक चीज़ है जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। नॉट इतना भी नहीं कि छोटे शहर की बात हुई, बट जनरली एक आउटसाइडर हो आप किसी फील्ड में, और मतलब मेरी की संघर्ष से तो कंपैरिजन नहीं कर सकती मैं, लेकिन आई थिंक हम सब की ज़िंदगी में जब भी संघर्ष आया है या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको जब भी हमने छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे ओवरकम किया होगा, that is the story of every fighter. So प्रियंका और बंसाली साहब, आप दोनों से एक सवाल था। बॉलीवुड में आप कहाँ हैं? अच्छा, हो रहे। बॉलीवुड में आजकल देखा जा रहा है कि लगातार स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फिल्में बन रही हैं। 5 सिंह तोमर से शुरुआत हुई, मिल्खा सिंह पे आई, फिर अब मैरी कॉम आ गई है। तो क्या बॉलीवुड अब इससे एक ट्रेंड को पकड़ रहा है, क्योंकि एक सक्सेसफुल फिल्मों का एक ट्रेंड है, एक सिंपल फार्मूला है सक्सेस फिल्म का? और कौन सी फिल्म्स को कंपेयर करते हो आप? क्योंकि मिल्खा सिंह और मैरी कॉम को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आप 5 सिंह तोमर को कर सकते हैं एज पीपल। ये पहली बार है जहाँ पे एक फीमेल एथलीट के ऊपर इस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनी है, एंड आई थिंक उसका ओहदा आपको छोटा नहीं करना चाहिए कह के कि ये एक ट्रेंड है। मेरी एक बहुत ही हमारे देश का अनमोल रत्न है, एंड आई थिंक उसको वो अहमियत देनी चाहिए। इट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल टू से कि ये एक ट्रेंड है।
Hi, Priyanka. Sasha here from Hot Air. Hi, Sasha. Hi. Priyanka, you know, in terms of the place, I mean, Northeast is a place which is not really touched in Bollywood. Couple of places like Darjeeling and all of that is touched. So when you talk about Manipur, I've seen a lot of shoots had happened in Himachal Pradesh. So have you guys like shot in like, you know, Manipur as well? Umang, if you want to talk about it, or Sanjay. We've gone to Northeast. We have gone to Manali, Dharamshala. We've touched those bases which look exactly like Manipur. We've recreated over there. Basically, that is what it is. It's not that actually gone to Manipur to shoot and all. We went for a recce. We did a lot of you know, research in terms of what it needs to look like, but it's a lot feasible to be able to shoot in places and recreate, which is why we did a lot of the set work in Bombay. We recreated because, you know, it's easier for a big group of people to go and cameras and stuff to be able to shoot that. And we had a production designer who was amazing, who recreated everything exactly. So it was great. And what about if you had to give a one solid punch in your real life, who would that be? I punch people all the time. One person in real life that you सर would... beware. कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी कहर का शिकार होगा. काफी हैं. Thanks. Priyanka, a child gives birth to a mother. So is that true in Mary Com's life as well? Can I see you? Yeah, SKD of Bollywood now. Yeah, hi. A child gives birth to a mother. Do you agree with that? And is that true for Mary Com's life as well? I think you'll see that. I think every woman becomes different. She changes as soon as she's a mother, and that is an important chapter in Mary's life in the film as well. Priyanka here. जी मैंने एक लोरी गाई है इस फिल्म में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वक्त पे आती है फिल्म में. It's a very intimate conversation between the mother and her child, and yeah, it was fun. Shashi, it was a good tune. Thank you. Priyanka here, straight. Yeah. Yeah, you're right here. Okay, आप प्रोमो में आपने दिखाया कि मेरे हाथ के खाना खा के दिखे, तो क्या क्या खाना बनाई आपने ऑन सेट? जरूरी है मैं खाने की बात कर रही थी. मेरे हाथ का खा के तो देखो. बनाया आपने खाना कभी? सर हम खाने की बात नहीं कर रहे थे उसमें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अगर आपका सवाल है कि मैं कुकिंग जानती हूँ या नहीं, उसका जवाब है बिल्कुल नहीं. अंडे अच्छे बना लेती हूँ. पिक्चर में कुक किया है. फिल्म में कुक किया है. मेरी बहुत अच्छी कुक है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी कुक है. थैंक यू. खबरें नहीं है, इट्स अ फैक्ट. मैंने तो आपको कहा है 3 बार हो चुका है. अभी आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरे जवाब से, मैं भी बोर हो गई हूँ इस सवाल से. इट्स अ चोपड़ा वीकेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द मूवीज. प्रियंका हियर टुवर्ड्स योर लेफ्ट. प्रियंका, जब भी हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि जैसे कि हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, हम उसे बरकरार रखने की कोशिश करते हैं. काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे आपको अपनी बॉडी के लिए, अपनी मसल्स के लिए. कितना प्यार है आपको अपनी मसल से और कितना कंटिन्यू करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली शूटिंग जैसे मेरी ख़त्म हुई, मैं जोया अख्तर की फिल्म शुरू करने जा रही थी और जोया ने मुझे फोरवॉर्न किया था. मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन थे टू लूज, बिकॉज आई डिडंट जस्ट build muscles, I put on a lot of bulk. I wanted to look big in the film. So Zoya had warned me because in her film I play a completely opposite character, feminine, girly. तो उसने बोला था जैसे संजय सर ने मुझे थ्रेटन किया था मेरे गाने में मसल्स लेकर मत आना, वैसे she had told me. So I went on a crash diet and lost my shape and तो मुझे एक्चुअली फिल्म से प्यार होता है. अगर आपका कैरेक्टर करेक्ट आ गया, आपने शूट वूट सब खत्म कर लिया एंड इट लुक्स गुड, मूव ऑन. सेम चीज़ को मैं पकड़ के नहीं रखती. इट गेट्स बोरिंग फॉर मी. We just take a last couple of questions. Anybody here? Sanjay ji. Answer. Sanjay ji. Yeah. Sanjay sir, question on the left. Top left. मुझे आपसे पूछना था कि इस फिल्म को आप बॉक्स ऑफिस वाइज कैसे देखते हैं? आप प्रोड्यूसर है फिल्म के, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस वाइज कैसे देखते हैं? नहीं, प्रोड्यूसर 2 किस्म के होते हैं. एक जो खाली पैसे देखते हैं, एक जो फिल्म देखते हैं. तो मैं फिल्म देखता हूँ, उसके मेरिट्स, उसकी स्क्रिप्ट, उसका प्रोडक्शन वैल्यू क्या होगा, वो उसके हिस्ट्री में क्या जगह बनेगी. पैसे बनाएंगे तो बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी है, लेकिन उसके लिए हमारे अजीत जी है यहाँ पे. Ajit ji, you want to answer that? You have the answer right already. 100 crore film with a woman in lead, you know. There you go. All right, one last question, then we'll wrap it up. ऐसे statements नहीं बनाते. Anybody? Or we can wrap it up with a photo op right now.
Thank you, guys. We'll just take a little Thank you photo. very much. Thank you. Thank you. One photo up for with everyone. Just a minute. I want to play the launch promo for you. So just a minute. Oh, one second, lights on. Just one last request by Priyanka. Can we have Darshan on stage, please? Yeah, so that. Yes. That's the hero of the film. Fantastic in the promo. Thank you.
Thank you very much. Thank you, Umang sir. All right, guys. Thank you. Thanks a lot. Well, like I said, do stay back for this. It is a very special initiative. I want to play this little promo for you from Cine Shots. We'll just take this down and I'll play a little trailer for you. एक second रुक जाओ. वो ट्रेलर नहीं सर, एक अलग ट्रेलर है. ये Cine Shots की. ये Viacom मीटिंग का कुछ है. Okay, that was it. Can we have the lights on, please? Thank you guys for joining us. See you next week.